Assalamu alaikum. Welcome to next sessions. So welcome Dr. Osman and Sarnavan Tasneem. So as usual, so we are going to discuss three scenarios or four scenario probably. So in the first scenario, I will be the candidate and Dr. Usman is an examiner. So Dr. Usman, please start this scenario. Okay, Dr. Shafkat, good evening. You have a 46-year-old sheep farmer suddenly brought to emergency department with sudden onset of shortness of breath and cheesiest material coming out of his mouth. He has been complaining of on and off upper abdominal pain in right hypochondrium, and he consulted some local doctor who gave him medicine for this condition. But presently he has severe abdominal pain. On examination, he's hypotensive, he has tachycardia, he has bronchospasm, and he is jaundiced. How would you like to manage this case now? So with this information, so most likely this patient is a case of the hydatid cyst, and this cyst has ruptured into the biliary bronchi, and this patient also has developed sinus, has developed the anaphylaxis as well. So the patient is also jaundiced. So I'm also worried that this patient is also having there's the obstruction of the biliary radicle as well. So the first step would be obviously the patient required admission and resuscitation. So aggressive resuscitation because this is a case of anaphylaxis. So I would involve my internal medicine colleague as well in this patient. So we will give him the injection adrenaline because he has developed anaphylaxis along with the bronchodilators. Give him the I will give him oxygen with the IV fluids and along with the hydrocortisone. So after stabilization, so then the next step would be to investigate this patient. So Okay, after your initial resuscitation, the patient was stabilized. He is out of anaphylactic shock. Now, how would you further investigate this? Investigation would you like to have to diagnose this condition? right. So the first of all, I would like to confirm the diagnosis with the help of the ultrasound abdomen to see the lesion in the liver, and along with the I would like to have chest X-ray and the is hydatid cyst serology ELISA, and along with other investigations at the liver Okay. function test, particularly in this patient. Okay, liver function test reveals elevated liver alanine transaminases, and his bilirubin is slightly raised. And his ultrasound shows hydrated cyst of WHO classification active group, and it was and on radiology it was a grade radiological classification was hydrated. How would you manage? And also CT scan of the chest reveals water lily sign in his right lung. Okay, once the patient has been stabilized, so I would like to ask the patient for what the treatment he has already taken and the previous result of previous investigation. So in this case, the patient most likely he has this is the hydatid which has ruptured into the lung. So I would like to involve the thoracic surgeon in this case because this patient will require the intervention by the thoracic surgeon as well. Because it's the and at the same time, so I would like to know what is the size of the lesion and where it is, the hydatid cyst, and where is in which. Okay, the hydrated cyst is in segment 5 and 6 of the right lobe of liver, Okay, and it is communicating with one of the biliary channel. right. Okay. So because the patient is already jaundiced, that means it has it's likely that there's a communication. So in this case, I would like to involve the gastroenterologist for the ERCP and to relieve his jaundice. And afterwards, so this patient will require the surgical intervention, will require the excision of the require the surgical intervention. So combined general Okay, surgery what plus surgical procedure plastic would you surgery. like to do? How would you treat
You have referred this case to thoracic surgeon. He has done segmentectomy for the lesion of the chest. Now, how would you manage that lesion in the liver with that is 4 centimeter Okay, so in it the will be a combined. It will be a combined endeavor, the general surgery and thoracic surgeon. So once we open up the abdomen, so the first step would be firstly to prepare the patient with hypertonic saline and make sure the patient doesn't go into the anaphylaxis, and we have to prepare him with the um, uh, mebendazole, and uh, perioperatively need to pack with the hypertonic, the protein pad soaked in hypertonic saline. So after that, we have to inject the aspirate it, then inject the 20% say 20% hypertonic saline and give the 5 to 10 minutes so that the scolicidal they becomes inactive. So would you afterward, like to do open surgery, or would you go for radiological aspiration and treatment of the cyst? so this is the patient who has a 4 centimeter and it has ruptured. So that requires surgical intervention. So it's not this is not candidate for the pair therapy because it has a communication with the biliary radicals and it has ruptured into the lung parenchyma as well. Okay. And for after your surgical intervention, what would be your surgical option in this case? What would you do? So it would be in aspirating, then injecting the 20% saline and then making NCN and taking out the endocyst along with the daughter cyst. So then we're packing with the omentum. So it with the, Okay, there was a and we channel need that to was check on the communicated. biliary radicals as well. Yes, there So was one biliary radical that was bleeding from. There was bile leak from the biliary radical. What would you do about that radical? so you need to put skewer this biliary radical with the stitch. Okay, okay. Thank you very much. And what post-operative care would you like to do? So the post-operatively and the early post-op care is as usual. Any surgical patient who has undergone surgery under general anesthesia. So apart from them, we would like to continue the uh, anti mebendazole for the 3 4 4 weeks post-operatively. Okay, okay, okay. Thank you very much. 7 minutes हो गए सर. ओके नाउ द फीडबैक कहाँ कहाँ पे जो अब इसमें ये एक चीज मेरी तरफ से है कि व्हेन यू आर एग्जामिनर तो आप इंफॉर्मेशन पूरी ना दें, मतलब इतना सही है. बिल्कुल सिनेरियो को क्लियर ना कर दें ना, आप उसको ठीक है, एम्बिगुअस रखें जरा। हम्म। वो तो खैर अब वैसे भी सर, क्योंकि अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो तो एम्बिगुअस रखेंगे भी सही, तो फिर भी क्लियर है कि मैं वही नहीं चीज नहीं पूछ रहा हूँ. नहीं क्लियर हाँ, नहीं नहीं ठीक. फिर भी अच्छा, आप चलो उसको ठीक बहुत, है. हाँ वो ताकि आगे इतना सिनेरियो जब क्लियर हो इट्स क्लियर कट है, इट्स हाइड्रेटेड से रप्चर्ड है ना, हम्म, तो हम्म, आप उसको इस तरीके से रखें ताकि और चीजें भी सोचने में आएंगी ना कि और क्या क्या हो सकता ठीक है. है। Okay, ठीक what है। would you the similar patient belongs to a area, he has obstructive jaundice, he has been uh, having living in the near seashores, and he takes raw seafood. He developed obstructive jaundice. What is your diagnosis? If the patient is living near the seashore. Um, so in this patient, S S sorry, Pulmonary something like the infestation, liver fluke infestation, most likely. Hello. So video stuck. Usman, हाँ मेरे को वीडियो से स्टक हो गई ना। Hello, Usman, you are muted. Now, there is a patient who was a fisherman. He Yeah. consumes a lot of seafood and develops yellow discoloration of his eyes, pain in right hypochondrium, and itching on his body.
What would be your diagnosis? So, yes, so I will start up with the history and to see whether what the underlying cause for the jaundice. So this could be a simple viral hepatitis, and it could be the surgical jaundice because of the obstruction. So I will take the detailed history from the patient and keeping in mind the different causes. So the first step would be to rule out whether it's a medical jaundice, what's the duration of the jaundice. Are there any associated symptoms like malaise before the development of the jaundice? How did the No, patient? patient has jaundice. It was intermittent, and patient has fever, on and off fever, and there is element of obstructive jaundice. MRCP revealed filling defect. Filling defects? The filling defects would probably some sort of sclerosing cholangitis the patient because of the liver fluke infestation, probably. But Yes, it's not and MRCP. yes, MRCP revealed there was liver flukes in the common bile duct and intrahepatic duct. How would you manage this then? Liver fluke. They're intrahepatic. The liver flukes are inside the intrahepatic duct. Yes, the extrahepatic common bile duct. Extrahepatic count, but so that will Yes. require the ERCP and ERCP sphincterotomy. Now ERCP has failed, and gastroenterologist is unable to extract the uh, uh, parasite from the sphincterotomy site, and there are multiple stones in the CBD as well, along with parasite. What would Okay, be your what is the management then? size of the common bile duct? Is there a biliary channel that dilated or not? Yes, dilated. It is So then the dilated next option would 1.2. be with involving the interventional radiologist and going through the percutaneous approach, percutaneous route, and going with the percutaneous transhepatic approach and taking these stones out. But that Okay, involves that has also failed. What surgical option would you have? So the next option is depending on what is the condition, the status of the liver, um, is child classification, whether the patient had developed liver cirrhosis or not. And the other option would be the PTBD has been failed. It's Yes, and the ERCP is endoscope and it was also unsuccessful. unsuccessful. So what it's on in the extrahepatic biliary channel, right? Yes, yes. So the next step again, involving the intervention, the gastroenterology, if we can do with the EUS guided choledochoduodenostomy. No, is what would you do surgically? Surgically, then the option is if it's only in the extrahepatic, then option if minimal invasive invasion measures they have failed. So the next Yes, would be surgical options, going with the yes, exploration of the common bile duct. yes. Exploration of common bile duct shows multiple uh, fasciole hypotheca and coronarchus anensis, and it was a biliary sludge. You wash it, and what were anastomosis? Would you primarily repair the common bile duct, or would you do some biliary drainage procedure? Now, in this way, this patient, because this patient will develop a recurrent stones. So in this patient, the drainage procedure would be better option, and I will go for obviously involving the hepatobiliary surgeon and do the choledochoduodenostomy, hepaticoduodenostomy. ओके, थैंक यू वेरी मच। ये सर दूसरा सिनेरियो भी मैंने साथ ही कर लिया है, ये जो एस्केरिस वाला होता है ना, तो नहीं स्कैरिस वाले ये वाला अपना लिवर फ्लूक, लिवर लिवर क्लोरार्कस एनेंसिस, हाँ सॉरी ये तो हमारे क्लोरार्कस एनेंसिस। ये तो अगर बुक्स में ही है, लेकिन हमारे तो कभी वो ना देखा है इसको। लेकिन यहाँ पे ये हो सकता है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे ये ज्यादा है ना, ये या फार ईस्ट एशिया वाला, ये हमारे एरिया में तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो स्नेल टेपर मोनोट्रामाटोड, इसमें भी अल्बेंडाजोल देनी होती है सर, प्रेजिक्वांटिल देनी होती है, मेडिसिन इसमें भी वही है। ठीक है। और इट वाज ए वेल डिफेंडेड केस एंड वेल मैनेज केस। तो सर इस मेरी तो ऑब्जर्वेशन है सर, नुमान आपके ऑब्जर्वेशन देना चाहते हैं तो देख लें। इसमें एक तो पहले पहले सिनेरियो में तूने हेपेटोबिलिटी का जिक्र किया, सर्जन सर्जन का शफाकत इस वाले में हाँ उसके अंदर जो हाइड्रेटेड सिस्ट का जो था thoracic surgeon, I talked about the thoracic surgeon, gastroenterologist, hepatobiliary का नहीं बोला नहीं है। हाँ सर, वो these complicated cases, these are to be
discussed in multidisciplinary higher centers, जिस तरह का ये केस मैंने आपको दिया था, it has to be इनिशियल स्टेबलाइजेशन होगी या तो उसके बाद जो है ना। yes it एक बार the हेपेटोबिलिटी का बता दे कि हेपेटोबिलिटी को भेजूंगा। ठीक है, दूसरा स्टेबलाइजेशन ठीक है। पेयर की इंडिकेशंस बताना, ये क्या है पेयर जो लिखा हुआ है किताबों में, उसकी इंडिकेशंस क्या है? देखिए पेयर की इंडिकेशन है साइज में लेस देन 5 सेंटीमीटर, आपकी जो 5 to 10 सेंटीमीटर किसी एक जगह मैंने पढ़ा था उस पे जो पेयर का है। बाकी है कि एक्टिव है, हाइड्रेटेड सिस्ट जो है किस में नहीं करनी वो है क्या बिल्कुल पेरिफेरी पे पड़ी हुई है जिसपे रिस्क ऑफ जो है ना रप्चर होने के चांस है, उसमें पेयर नहीं करते। बाकी उस्मान तुम बीच में ऐड को कर दो पेयर की और इंडिकेशन। सर पेयर की एक्सेसिबल साइट होनी चाहिए सबसे पहले, कि इट शुड बी ऑन द एक्सेसिबल साइट। और साइज कितना होगा? आपके पास जो है ना साइज 5 एंड 5 to अनरप्चर्ड 5 10 सेंटीमीटर यस। एंड 5 किताब में कोई मेजरमेंट किसी किताब में नहीं लिखी हुई, मैंने ढूंढने की कोशिश। ये मैंने एक एल्गोरिथम था उसमें देखा था, उसमें दिया था लेस देन 5 सेंटीमीटर मेडिकल ट्रीटमेंट, 5 to 10 सेंटीमीटर पेयर और मोर देन 10 सेंटीमीटर सर्जिकल, जो उसने दिया हुआ था ना एक, मतलब उसने एल्गोरिथम वो दिया हुआ था उसमें। यस तो बेले ने ऐसा कोई मेडिकल सर मेडिकल ट्रीटमेंट तो सब में देना है आपने, क्योंकि आपने उसको हाँ डॉटर सिस्ट नहीं मारनी है पहले। प्राइमरी बिफोर बिफोर एनी इंटरवेंशन और ऑपरेशन यू हैव टू गिव इमरजेंसी के अलावा, अगर रप्चर होगी तो अलग बात है। इफ इट इज इलेक्टिव प्रोसीजर, because pair is an elective procedure, you have to give scolicidal before the any intervention, whether it is open repair, open repair medical treatment सब में होगा। लेकिन कितना प्राइमरी दवाई मेडिकल देनी है? ट्रीटमेंट प्राइमरी 2 weeks before, for 14 days you will give albendazole या praziquantel or mebendazole, whatever is available, 2 weeks before any intervention, whether pair or laparoscopic surgery or open surgery. As a scolicidal you have to give antihelminthics। उसके बाद आप करेंगे पेयर की जो कॉन्ट्राइंडिकेशन, उसमें ये है कि एक तो ये मेजर वेसल के साथ हो अगर उस तरह, तो उसको नहीं कर सकते आप। इट इज कम्युनिकेटिंग विद सम बिलियरी चैनल्स प्री ऑपरेटिवली, देन पेयर इज नॉट एन इंडिकेशन। इफ यू हैव एन रिस्क ऑफ, आप क्लियर डायग्नोसिस नहीं है, you have a differentiation between cyst adenoma और hydatid cyst, तो उसमें पेयर नहीं करनी है आपने। बाकी मेन पेयर की जो इंडिकेशन वो यही है कि जो है ना, अगर आप वो रेडियोलॉजिस्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें किस सेगमेंट में लाई करती है सिस्ट, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ही हैज टू गो परक्यूटेनियसली। उसमें है तो और नॉर्मली जो लेफ्ट लोब की सिस्ट होती है ना, लेफ्ट लोब जो है ना बिल्कुल डायफ्राम के नीचे पड़ा होता है ना, छोटा भी होता है, तो उसमें रप्चर खतरा ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसमें नहीं करनी। बाकी अगर जो है ना पेयर हो सकती है तो पहली फर्स्ट चॉइस पेयर है। लंग्स के लिए उसके अंदर पेयर नहीं है, लंग्स में पेयर नहीं है पेयर नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना, जी सर। उसकी सर्जिकल रिसेक्शन है। सर और लंग की जो होती है ना हाइड्रेटेड सिस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एक्सपैंड भी जल्दी करती है, जो सर हाइड्रेटेड सिस्ट एंड लेवल की है। इसका मैंने पढ़ा था साइज जो ना ग्रो है ना पर ईयर के हिसाब से पता नहीं कितने सेंटीमीटर था, लेकिन लंग की जो डी है ये जल्दी रैपिडली ग्रो करती है बिकॉज ऑफ सेकेंडली इफ आपने सिस्ट को क्लासिफाई करना है इनटू 3 ग्रुप्स, एक्टिव, इनएक्टिव और ट्रांजिशनल जोन में जो सिस्ट है, जो इनएक्टिव सिस्ट है दैट इज कैल्सिफाइड, और रेडियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 5 वाली जो है उसको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व। एंड जो इसी तरह जो एक्टिव सिस्ट है ना, जो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की, उसकी ट्रीटमेंट करनी है आपने, क्योंकि बॉडी ओन डिफेंसेस कैन ओवरकम द सिस्ट, उसको कैल्सिफाई कर देती है। अच्छा पता है किससे चलेगा भी ट्रांजिशनल है सर ट्रांजिशनल के लिए वो जो अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स है ना, वो बताएंगे कि इट इज वेदर इट इज एक्टिव, इनएक्टिव और ट्रांजिशनल। उसमें फर्स्ट एक्टिव की जो फ्लोटिंग यस मेम्ब्रेन जो आती है एक या इंटरनल जो फाइन सा उसकी आती है एक्वोज सेप्टा आती है। हाँ यस एक्वोज आती सेप्टास हैं। हाँ एक्वोज आते हैं उसके अंदर, सेप्टा तो वैसे ही है ना, वो तो उसको सर बताएगा ना, उसकी सेप्टा तो मल्टी लॉकुलेटेड सिस्ट वो आएगी ना डॉटर सिस्ट सर ना। तो उसकी जो सर डेब्री होती है ना वो होता है कि उसके नीचे से वॉल से नीचे गिर के तो आपने उसमें
कैविटी के नीचे सर सेटल डाउन कर देते सर सर और फ्लोटिंग मेम्ब्रेन। सर तो ये साइंस है एक्टिव के, और जितनी ज्यादा कैल्सिफाई होती जाएगी उतना फिर और सर्जिकल ऑप्शंस क्या क्या हैं इसमें? पेरिसिस्टेक्टमी होती है, डीरूफिंग होती है, जो कैपिटोनाज जिसको कहते हैं, तो आप डी उसको रूफिंग, हाँ यस, एस्पिरेट डी किया रूफ, और उसमें डी सारे रूफ डॉटरसिस एंड निकाल ओमेंटोप्लास्टी। एंडोसिस निकाली और उसके बाद आप उसको मेंटल में डाल दें। अच्छा, दूसरा इसकी पेरिसिस्टेक्टमी ना, हम्म, आपने आपने इसकी सिस्ट की वॉल को बायोप्सी के लिए लाजमी भेजना है नहीं वो तो पूरे ऑलवेज। जाएंगे ना, वो तो हाँ पूरे सिस्ट जो निकालने वो तो भेजना। लेकिन पेरिसिस्टेक्टमी होती है इसकी, जो हाइड्रेट सिस्ट, इसकी 3 वॉल्स है ना, एंडोसिस्ट होती है और सर, एक्टोसिस्ट, और एक लिवर होस्ट जो है ना उसकी लिवर की यस, कंप्रेस हुआ होता है पेरिसिस्ट, बंदा। जी ठीक है, तो सर। जो पेरिसिस्टेक्टमी वेरी, इट्स वेरी ब्लडी ऑपरेशन आपको सर यूज करते हैं। जो अगर छोटी सिस्ट है फिर तो पेरिसिस्टेक्मी वो कहते हैं, लेकिन पेरिसिस्टेक्मी क्योंकि आप लिवर के उसमें से जा रहे होते हैं तो बेस्ट होता है कि आप उसको जैसे लेप्रोस्कोपिकली भी करते हैं, यू जस्ट मेक एन इncision ओवर द सिस्ट आफ्टर सर ऑब्वियसली एस्पिरेशन और इंजेक्शन के बाद जो ना, उसके बाद आप सर मेक एन इncision और सारे को उसको स्कोली डॉटर से इसको इवैक्यूएट करने, एंडोसिस को निकालते हैं। अच्छा, लंग में भी अगर सर गई है तो उसी कैविटी के अंदर चले जाते हैं, सारे को आप आउट कर देते हैं और सर फिर उसको मेंटम अंदर प्लग इन कर देते सर हैं। तो लेप्रोस्कोपिक और ओपन में कोई खास इसमें तो नहीं है कि किस में नहीं लैब कर लेंगे? नहीं नहीं, सर, वही तरीका एक ही है दोनों में। हाँ, कैप्टनाज जो कैप्टनाज कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, डी रूफिंग, और उसके बाद जो डी आपने रूफिंग और कैपिटोनाज जो है ना, बेसिकली इस तरह गोला सा होता है ना, तो इसके नीचे सरफेस को ना पहले आप एस्पिरेट करके ना अंडर डॉटर सिस्ट मार देते हैं। पहले हम्म पहले वही आपने स्कोलिसाइडल एजेंट लाजमी पहले खोलने से पहले उसमें हम्म हाइपरटोनिक से लाइन डालना है। एस्पिरेट करना पहले, हाँ, फिर पहले एस्पिरेट करके फिर उसको डी रूफ करना है, वरना वो फैल जाती है। हम्म। और फिर उसके बाद जो है ना, उसकी जो वॉल आपको नजर आ रही है उसको खोल के उसके अंदर से वो सारा गंद निकाल के उसकी लेमिनर मेम्ब्रेन उतार लेनी है। हम्म फिर उसको देखना है कि पेरिसिस्ट नहीं निकालने की कोशिश करनी है, सिर्फ एक्टोसिस्ट निकालने की कोशिश करनी, क्योंकि पेरिसिस्ट तो चिप लेवर कैप्सूल होता है एंडोसिस्ट, हाँ बेसिकली। बिल्कुल, एंडो और एक्टिव भी एंडोसिस्ट होती है बेसिकली जो है ना, जी सर, जो उसका वो जर्मिनल हाँ जर्मिनल सरफेस होता जर्मिनल है ना में जो, ठीक है। उसके बाद जो पेरिसिस्ट है ना, वो बेसिकली लिवर का कैप्सूल है, लिवर का इन्फ्लेमेटरी वो है, रिएक्शन की वजह से वो कैल्सिफाई हो जाता है। हम्म, तो उसको उतारने की कोशिश, फिर उसके बाद जो है ना आपने उसको, जो उसका सुराख बन गया उसके अंदर मोमेंटम दबा देना है। हम्म, ठीक ठीक है, और लेकिन है। उससे पहले आपने ये देखना है कि देयर शुड बी नो लीक फ्रॉम द एनी कम्युनिकेशन विद द बिलरी चैनल। अगर देयर इज सम लीक, देन यू हैव टू ओवरस्यू द लीक। हम्म, जिस तरह फिगर ऑफ 8 का सूचर लगाते हैं ना, ओवरस्यूइंग करनी है, ताकि जो है ना, तो वो बिलरी लीक पहले कंट्रोल करने के बाद आपने जो है ना उसको फिर अंदर मोमेंटम प्लग करना है। सही हो। तो फिर तो नुमान आपकी तरफ से और कोई चीज कोई इससे नहीं बस related ठीक होती? है। तो ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आप सिनेरियो। पोस्ट ऑप कितना अर्सा देनी है एल्बेंडाजोल वगैरह? सर ये कम से कम 1 महीना देनी है। इसमें जो एक किताब में लिखा हुआ है, एक तस्वीर बेले में बनी है, 30 वीक तक भी दी है उन्होंने। ये डिपेंड करता है कि कब तक मरते नहीं है। ये भी इसमें एक बेले लव में जो तस्वीर बनी हुई है ना, उसमें बताया कि 30 वीक्स तक भी उन्होंने एल्बेंडाजोल दिया है। अच्छा, नहीं प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल कोई खास है या नहीं? सर एग्जैक्ट इसमें ना, कि मैंने तीनों किताबों में देखा है, वॉशिंगटन में भी, उसमें भी एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हुआ। अच्छा एक जगह ठीक। पे लिखा हुआ है कि 300 दिन भी, मतलब 1 साल तक भी दे सकते हैं एल्बेंडाजोल। अच्छा लेकिन नॉर्मली महीना 2 महीने तो देनी देनी है पोस्ट ऑपरेटिवली भी। ठीक है। डोज क्योंकि इसका चक्कर ये है कि ना, इसमें रिकरेंस बहुत, इसमें ना रिकरेंस बहुत ज्यादा होती है। ठीक। मुझे बताया कि इसकी जो मेडिकल जो ट्रीटमेंट है, अल्बेंडाजोल जो है, डोज कितनी सर है और आवाज नहीं इसके, आ रही आपकी से। हाँ, अल्बेंडाजोल की जो डोज और देनी किस तरीके से? सर ये 20 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से देनी होती है शायद ना। 20 मिलीग्राम पर केजी, ज्यादा नहीं हो जाएगा? मेरे ख्याल इसकी 10 टोटल यूनिट 400 मिल तो 400 की 400 मिलीग्राम 800 मिलीग्राम है, हाँ। 800 मिलीग्राम जो ना वो आपने डेली जो ना पेशेंट को देनी है ना, और बीच हम्म। में ब्रेक होनी है कि आफ्टर 4 वीक? पहले करते होते, अभी नहीं करते? सर अभी ये नई किताब में कुछ एग्जैक्टनेस का लिखा हुआ नहीं है कि कितना ये मैंने जो है ना। इसमें पहले होता था, पहले ये अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच ये होती थी कि आप 4 वीक के लेते थे, फिर 1 वीक के लिए ना उसको देते थे, गैप देते ताकि रिकवर कर दे बॉडी बाकी सारे जो साइड इफेक्ट से। अब वो कहते हैं कि नहीं जी, ये अगर आप करते हैं ना तो जो, क्योंकि इसकी जो सिस्ट है ना, सिस्ट के अंदर तक ड्रग पहुंचते हुए ना, बेसिक उसकी अपनी एक क्या डिफेंस मैकेनिज्म, जो एक्टोसिस्ट है ना, वो नहीं अंदर पेनिट्रेट करने देते ड्रग्स को।
तो बाय द टाइम आप 4 वीक तक उसकी इतनी कंसंट्रेशन सिस्ट के फ्लूइड पे पहुंचती है, तो फिर आप ब्रेक लगा लें तो फिर वो उस लेवल की नहीं रहता, थेराप्यूटिक लेवल नहीं रहता। वो भी वो इसको अभी करंट जो रिकमेंडेशन है वो उसमें ब्रेक नहीं है, इसकी कंटिन्यूअस है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट सिनेरियो फिर मैं प्रेजेंट करूं जी। जी सर। अच्छा ठीक है सर। कौन सरेंटी मैं शेयर कर रहा हूँ स्लाइड शेयर। यस, which one? थोड़ा सा एक मिनट। अच्छा चलिए सर, मैं ये याद क्यों नहीं रहा इसमें से? ये तो मैं दूसरी वाली आ गई, नहीं ये नहीं, सॉरी, ये दूसरी वाली आ गई और उसमें आ नहीं रहा अभी ये। हम्म। नहीं, चलिए खैर, वो हो नहीं रहा। It's a 25-year male patient has been brought in the emergency department with the history of road traffic accident. He was going on motorbike and he had head-on collision with the passing vehicle. So on arrival in the emergency department, the patient is conscious and he has sustained multiple laceration of the face and the legs. Patient is conscious. His pulse is 105, blood pressure is 110/70, and there's obvious deformity of the right leg. How will you manage this patient? So the patient has sustained a major trauma, and I will immediately activate my trauma team, and I will start examining the patient by first a brief talk with the patient will show me that his airway is patent. Then I will assess his breathing. I will I will expose the patient. I will look at the chest and auscultate the chest and see if the breath sounds are equal bilaterally. Then I will Breath sounds are equal. Patient is conscious, he is talking. Breath sounds are equal on both sides. Okay, then I will move to his circulation and assessing his if he is losing blood anywhere. There are multiple lacerations at those that if there is any active bleeding from them. हाँ कुछ कह रहे? Okay. You are saying is a patient's pulse is 105, blood pressure is 110/70 millimeter of mercury. Patient is conscious. Okay, so I will meanwhile I will the along with other basic investigation will be sent, and moving on to his right leg. I will assess the deformity. I will assess the Okay, this is his chest X-ray and the distal neurovascular. Yes, these are the chest. This is chest X-ray which has already been done before your arrival, and the X-ray of his leg. Okay. What will be the next step? So the X-ray of the leg shows there is fracture of tibia and fibula. I would like to know if there is any overlying wound on the leg. Any? Yes, there the 2 centimeter. There's the 2 centimeter wound on the anterior aspect of the right leg. Okay, so the distal neurovascular status I have assessed. It is okay. It's okay. Distal pulses are palpable, right?
Okay, and the chest X-ray, it appears okay to me. Yes. Uh, Okay, there's no evidence of hemothorax. So what's the yes, next and step? the ribs also. So I will assess his distal status is okay. I will assess for any signs of compartment syndrome in the right No, leg. there are no signs of any compartment syndrome. Okay, so I will next I will proceed to the stabilization of the fracture. I will like to immobilize the Okay, you fracture. apply the back slab. What's the next step? So I will concomitantly, I will advise my nursing assistant to administer IV antibiotics, tetanus prophylaxis, painkillers, and then I will call my orthopedic surgeon, my orthopedic colleague, and I will share the details with him and to plan for further management. Okay. Now they have plans. They will fix the bones after 2 days. Okay. So what's the next plan? So if he's in another hospital, I would like to transfer this patient to that hospital with applied back slab and with all the Okay. precautions. So the other hospitals at the distance of the 2 hours. So while en route, the patients started complaining of abdominal pain, and he started complaining of abdominal pain as it started developing abdominal distension as well. So what will you do? So the patient is still with me, or the patient has left You my have hospital? transferred the patient. Now suppose the patient is with you. Okay. Okay, I will again return to my assessment of the circulation part, and I will assess his abdomen. I will examine the abdomen. I will sorry, I missed the Foley catheter. I will pass the Foley catheter before, and I will assess his abdomen. I will examine it. Are there any signs of tenderness, rigidity, any guarding? And Yeah, I the will patient is conscious. His pulse is right now it's 110. Blood pressure is 110/70. The abdomen is slightly tender in the lower abdomen. okay. Next, I will like to request my radiological colleague for a fast scan So the to fast scan is negative. The fast scan is negative. There's no free fluid. okay, and I will also like to get an X-ray of the pelvis. So there is no evidence of any fracture pelvis. Okay, and the urine is also clear in the Foley Yeah, catheter. it's clear. Okay, so I will like to, as the patient is stable, I would like to get a CT scan of the abdomen and pelvis. So To what are you suspecting? he may have an occult, he may have occult intestinal injury or Okay, so this is the CT scan. so I'm unable to one minute, let me see it. Okay, you can see that you have talked to your radiologist. He's saying that there's the hematoma, the intrahepatic hematoma. See the complete almost involving whole of the right lobe of the liver. So it's the grade 4 liver injury. What will your next step? With the hemoperitoneume as well. So see the fluid. There's blood around the spleen as well, but the spleen is intact. So there's fluid around the liver as well, so in the pelvis as well. So there's a moderate hemoperitoneume. What will your next step? So, as the patient is stable hemodynamically and he's maintaining his vital signs, I would like to observe this patient for 24 to 48 hours. I will keep blood grouping and cross match. I will keep blood ready in case of any need of transfusion. And I will put him on strict bed rest and IV antibiotics and observe the patient. Okay. And I will So assess him so I will assess an ITC and continuous extensive monitoring okay. and charting. Okay. So after the 6 hours,
patient's pulse is now 120 per minute. His blood pressure is 90/60. You have given the 4 unit of RCC. So what will your next step? So the patient is now going into hypovolemic shock, and this means that he has started bleeding actively somewhere inside the abdomen, from likely from the liver lesion, from the liver injury. So I will first involve the hepatobiliary surgeon in my hospital, and I will discuss the case with him. Okay, right. So if he is available, I will. He is not request him available. to take over the case. He is not available. So I will then discuss the case with him on telephone, and accordingly So we will what will be decide if what he will be needs. his advice? I think we will need an exploratory laparotomy. The patient is Yes. going into shock, and Yeah. he's losing blood, and his Okay. vital signs are decreasing. So what will you do? So we will arrange blood. We will take high risk consent. We will arrange other blood products as well, like fresh fluid plasma and platelets. And I will inform my senior anesthetist colleague, and then we will perform an exploratory laparotomy. Okay, the patient is in operation theater. So what will be your steps? So first, after induction of anesthesia, I will drape the patient from nipples to mid thigh. We will drape the patient and put the towels accordingly. Then I will start with a formal midline laparotomy. Upper midline, starting full midline laparotomy, starting from sternum to below the umbilicus. Okay. Then as we enter the abdomen, if there is hemoperitoneum, yes, so there is 1 liter of the blood which you have evacuated along with the clots. What will next step? So I will first pack the abdomen for coordinates. How will you pack? So I will place one pack in at the liver, below the liver in the subhepatic area, and above the liver in subphrenic area, and another pack in the left side perisplenic area, and then 2 packs in right and left paracolic gutters, and 1 in the pelvis. Okay, you have done the packing. What will your next step? So now, after cleaning the abdomen, I will remove my packs one by one and see where there is the source of bleeding. And now the anesthetist has informed you that the patient has developed hypotension. What will you do? Now the systolic blood pressure is 70. So if there is any active bleeding going on, I will just, for the time being, I will apply pressure on the to stop the bleeding and give time to anesthetist to stabilize the patient. Okay, now you have applied the pressure and given the time to the anesthetist. So after giving you fluids and blood, now the systolic blood pressure is 95. What will your next step? So I will try to achieve hemostasis by arresting the source of hemorrhage. How will you arrest the hemorrhage? Depending upon from where it is occurring. There's a laceration right lobe of the liver. So you see that there's a large laceration which is actively bleeding. So I will first try to secure this with a direct suture using probably Vicryl 1 or Chromic 1 suture. Okay, you are trying to secure with the suturing, direct suturing, but you are unable to control it. Then I will try to place a plug on it, likely a plug made from Surgisil or a plug of Omentum. Yeah, you have tried it, but it's not working. Okay, so next I will then pack the bleeding, and I will again discuss with my hepatobiliary surgeon who is. So what will be his advice? His advice will likely be that pack the, if you cannot stop the bleeding, just pack the bleeding site and close the abdomen with tension sutures and transfer. So what are other possibilities from where this patient is bleeding? What are the likely? Yeah. The patient is bleeding from the liver, so likely the involved vessels are hepatic artery and portal vein. Portal vein. So what you can do in order to control the bleeding?
I think in our limited center, we can just apply the pressure. What And before, in a, so any other thing which you can do to control the bleeding apart from the packing? Sorry, sir. Okay, so can you do the Pringle maneuver to see whether the bleeding is from the arterial, hepatic artery, or the portal vein? Yes, but Pringle maneuver is also a temporary measure. So Yeah. So do you think it's going to work or not? yes, temporarily it will work. Okay, then how will you do the Pringle maneuver? Well, in Pringle maneuver, we pinch the free edge of the lesser momentum. How will you do that? At the well, exactly saying Okay. Okay, with the Pringle maneuver, the bleeding is still continuing. Now, what's the next step? So Hello. So what will be the next step? I think I have only choice with me is to pack the. Okay, you have done the packing, and you have packed the abdomen and close it. What will be the next step? I would like to transfer the patient after I think he's stabilized enough to sustain the 1 or 2 hours journey he has to travel. So when will you transfer the patient? I will keep assessing his vital signs along with my anesthetist colleague, and we will both. Okay, 6 hours after the surgery, the patient's abdomen is distending, and his blood pressure is falling. Systolic blood pressure is 80. So after 6 hours of surgery, what will you do? So this means that the patient's the packs are not working and he's still bleeding somewhere, and the packs are not stopping the blood. So apart from continuously replacing with the blood products and FFPs, I think we have to explore again. Okay. So when you have a transfuse your anesthetist and your team has aggressively resuscitated the patient, the blood pressure is right now is 100. His pulse has gone down. So what will be your next step? So we will try to use this window of stabilization to transfer the patient to the tertiary care center, and we will make sure that an experienced person accompanies the patient to the hospital. Thank you, sir. यार ये तो अच्छा नहीं हुआ, काफी आप मेरी क्लास ले ली है इसमें. एक मिनट मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ. Yes. Can you, sir, can you see my screen? Yes. हाँ, ठीक है. ये सर है, these are the गाइडलाइंस हैं 2020 की अबाउट द लिवर ट्रॉमा. तो इसकी समरी मैं बेसिकली आपके पास शेयर कर दूंगा साथ आप. सो दिस इज द ग्रेडिंग जो आपकी लिवर इंजरीज की हैं. तो ये तो आपको पता है कि सारा ये कौन से होते हैं, जस्ट फॉर द रिवीजन. नाउ the guideline they have given the algorithm. So the first step, obviously, starting with the ATLS protocols, you need to see whether the patient is hemodynamically stable or he is unstable. So in this scenario, patient was hemodynamically unstable. So the patient required the exploration. So once you have in the theater, you need to see whether it's a major liver bleeding or it's a minor liver bleeding. So in this case, there was a massive bleeding. So what's the next step? Next step would be applying a manual compression with both the hands. Now, at this time, you have to give the time to the anesthetist. So give the time to anesthetist so that he can resuscitate. So aggressive resuscitation is very important. If you start attempting to control the bleeding and you're not giving the time to anesthetist, the patient will end up with the cardiac arrest.
So this is the time you can just apply the compression with your both the hands. So this was the first step. Now the next step would be applying a Pringle maneuver. So the first is using your left hand with your index finger, thumb, middle finger in the foramen of Winslow, thumb in front. So you can compress the portal triad, and afterwards you can apply the vascular clamps. You can clamp it for the 15 minutes and then you release it 5 minutes. In this way, you can continue it. आप करेंगे तो उससे क्या पता चल जाएगा? You need to see whether the bleeding has stopped or not. If the bleeding has stopped, that means the source of the bleeding is either in the hepatic artery, it's an arterial bleed, or is a portal venous branch, right? So if the bleeding doesn't stop, that means it's probably arising from the retrohepatic vena cava या hepatic veins, या क्या हो सकता है सर, accessory hepatic artery भी होती है जो lesser omentum में है, left sided, या जो superior mesenteric से artery आ रही है उधर से भी आ सकती है. तो once you have done that, आप इसे करेंगे कि bleeding आपकी stop हो गई है, उसके बाद अब you take a suction, आपने assistant को left hand से liver को नीचे retract करे, you will apply the suction और आपको ढूंढेगा where is the bleeder, तो आप उसको ligate कर दें. Once you have done that, आपके different sutures हैं जो आप कर सकते हैं. टेक्निक्स हैं, तो आपने जो नीडल जो आपने ब्लंट टिप नीडल जो लेते हैं ट्रोमिक यूज करते हैं, और देन ब्रिंग अ मोमेंटम एंड प्लग इन इट. सेम वही है. अब इसमें होता है कई दफा होता है गन शॉट वुंड का ट्रैक होता है, देयर इज अ डीप कैविटी, सो इवन टेकिंग द डीप बाइट्स, आपने सूचर लिए हैं, द पेशेंट इज स्टिल द ब्लीडिंग इज नॉट बीइंग कंट्रोल, तो या ट्रैक्स हैं जो गन शॉट वुंड का पूरे बहुत लो उसमें से गया हुआ है, तो उसमें क्या बैलून टेम्पोनार्ड है जिससे करते हैं, तो आप पूरे ट्रैक को फिल कर दें. और एज ए डैमेज कंट्रोल आपने क्या करना है, यू नीड टू अप्लाई द सूचर्स, और उसके बाद पैकिंग की, और बाद में आपने पेशेंट आईसीयू में. सो दिस इज द पैकिंग कि आपने करनी किस तरह है. आपने फर्स्ट जो है ना स्टीर प्लास्टिक के ड्रेप लेने का, वैसे अगर पैक रखेंगे बाद में आपने 24 आवर के बाद जाएंगे, वंस यू रिमूव द पैक द पेशेंट मे स्टार्ट रीब्लीडिंग, क्योंकि आपके जो पैक है वो उसके अडेरेंट हो चुके होंगे. तो नीचे प्लास्टिक की एक शीट लगा देते हैं जो जो आती है, बैक पैक भी आती है जो फ्री रहती है, उसके ऊपर आपने पैक करना है, राइट. तो ये इसके जो लेसरेटेड वुंड है ना, इसके अंदर पैक नहीं डालना. ये शायद आपको मैं इधर पर भी नजर आ रही होगी बैक पे भी ना. सिमिलरली तो इसके अलावा और सर क्या क्या चीज ऑप्शंस हैं, मतलब ये तो एओर्टो केबल शंट हो गए, टोटल वेस्कुलर आइसोलेशन जो कि जो सिर्फ थ्योरेटिकल मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये चीजें हो सकती हैं. एंडोवेस्कुलर इक्लूजन ऑफ द balloon occlusion of the aorta, ये भी एक है जो सारा टोटल वेस्कुलर आइसोलेशन करनी होती है. लेकिन जस्ट वो कहने हमारे तो नहीं है, जब इस तरह की जरूरत होगी तो हम तो पैक ही करेंगे. मैश भी है, इसके मैश भी रखते हैं, मैश पेटोग्राफी भी है. इसके बाद इसके सर इन्होंने दी हुई है बाकी आपकी जो रिकमेंडेशंस हैं, डायग्नोस्टिक इन नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट की क्या क्या आपकी उसमें चीजें आपने रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपके पास सारी एंजियो एम्बलाइजेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, अराउंड द क्लॉक का थिएटर होना चाहिए. पेशेंट को जो आपने एसोसिएटेड इंजरी ऐसी नहीं हो जिसके लिए आपको सर्जरी, फॉर एग्जांपल बाउल इंजरी मिस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं. आपने सीरियल मॉनिटरिंग हो रही, कंसिस्टेंट जो मॉनिटरिंग करनी है, सेम सर्जन जो है जो एक्सपीरियंस हो. ये सारी उसकी है आपकी क्या क्या चीजें हैं जो कि आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट. फिर उसके ऑपरेटिव मैनेजमेंट की जो दी हुई रिकमेंडेशन दी हुई हैं. तो अब जो पेशेंट है, फॉर एग्जांपल आपका पेशेंट जिस तरह ये वाला था, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या था, यू गेट द सीटी एंजियो, क्योंकि उसको करवाएं और सीटी एंजियो एम्बलाइजेशन को ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हुई, तो पोस्ट ऑपरेटिव इसकी गेट द एंजियो एम्बलाइजेशन एज अर्ली एज पॉसिबल, राइट. और फिर उसके बाद अगर पेशेंट होता है उसको आपने बाउल इंजरी अपने जरूर माइंड में रखना है कि उस सूरत में आपको इंटरवल लैप्रोस्कोपी करनी पड़ सकती है, तो सीरियल एग्जामिनेशन, और उसके साथ जो है ना आपकी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, रिपीट सीटी स्कैन है, जो ब्लंट ट्रॉमा है उसकी जो मैनेजमेंट के अंदर है. तो ये मेरा ख्याल इतना कि मैं क्विकली जो है ना उसको सर शफाकत, एक एक चीज होती है जो वीनोवीनस बाईपास होता है, तो वो क्या चीज होती है जो पोर्टल वेन वीनोवीनस को यही बाईपास बाईपास करके आईवीसी? वीनोवीनस बाईपास यही होता है कि आपने
आईवीसी जो है, सुप्राहेपेटिक आईवीसी उसको क्लैम्प किया, नीचे से सुप्रा रीनल आईवीसी उसको क्लैम्प किया, ये दो लग गए। प्रिंगल मैनूवर किया, क्लैम्प वहां पे भी लगाया। ठीक है, जब ये लगाएंगे तो अब आपने ब्लड फ्लो भी जो है ना उसको जो वीनस आउटफ्लो भी तो देनी है ना, तो इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन जो है उसको करते हैं फेमरल वेन, उसके साथ बाई उसके क्या कहें शन डाल लें, उसके साथ उसमें डालते हैं और उधर से फेमरल वेन से एक्सिलरी वेन, इस तरह करके जो ब्लड फ्लो है ना वापस फिर वो ऊपर तक जाता है। तो ये वीनस बाईपास वाला जो ना, लेकिन ये तो मैंने इमरजेंसी में ये आप करने वाला? नहीं, ये हमारे वाला नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ ना, ये हमारे वाला काम, ये बड़े बड़े सेंटर में वहां पे भी नहीं होता, बहुत ही कम है। तो लेकिन ये सिर्फ एक मतलब वैसे आप कह लें कि ये है, अदरवाइज ये हमारे उस पे नहीं है। ये हमारे वाला काम क्यों, जो सबसे पहले हमने क्या मुझे पेशेंट हमने खोला है, तो बैक। आपने ये बताना है कि आई विल मेक श्योर द थिंग्स आर रेडी बिफोर मेकिंग इंसिजन। आपके ब्लड इज रेडी, ये सक्शन, दो सक्शन आपके पास, और इंसिजन कहाँ से देंगे, अपना एक ड्रेप करेंगे जीफी स्टर्नम से लेके तो आपके मिड थाई तक, यहाँ से, क्योंकि आप यू मे रिक्वायर दिस नॉटमी इस पेशेंट में, आपको एओर्टिक क्लैम्प करना पड़ सकता है, बाकी वो चीजें तो ये थ्रोकॉटमी करने, इंसिजन एक्सटेंड करना पड़ सकता है। तो ये आपने पूरे चेस्ट को भी इसमें प्रिपेयर करना। ये जितनी भी लेप्रोटमी है ना, ट्रॉमा लेप्रोटमी, उसमें जीफी स्टर्नम से लेके तो आपने मिड थाई तक, सुप्रास्टर्नल लॉज, सुप्रास्टर्नल लॉज। हाँ सॉरी सुपरस्टर्नल, सुपरस्टर्नल, ठीक है, तो वहां तक आपने ड्रेपिंग ये करनी है। और फिर उसके बाद जब यू नीड टू मेंशन दैट एवरीथिंग इज रेडी, आपके थोराकोटमी सेट, वेस्कुलर क्लैम्प देयर, आई विल मेक श्योर दीज आर रेडी, ब्लड इज रेडी। और जन द मोमेंट आप मेक इनसिजन तो आपके टेम्पोनॉइड इफेक्ट जब इट विल बी रिलीज, पेशेंट विल सडनली गो इनटू हाइपोटेंशन। तो आपने उसके बाद क्या करना है, सडनली आपने पैक किया, कंप्रेस किया, उसके बाद टाइम देना है कि आपने एनेस्थेटिस को वो रिसस्टेट करे। फिर उसके बाद आपने मैनुअल कंप्रेशन, फिर प्रिंगल मैनूवर, फिर उसके बाद अपनी इंडिविजुअल लाइगेशन करेंगे कहाँ पे है, नहीं हो रहा तो फिर अगेन आप उसको पैक करेंगे। और उसमें जो पैकिंग करनी है, तो पैकिंग का आपको तरीका होना चाहिए, किस तरीके से हमने ड्रेप करना है, प्लास्टिक वाली शीट रख के उसके ऊपर पैक हमने रखना है, और लिगामेंट्स को डिवाइड नहीं करना। और फिर उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिवली आज इस पेशेंट को आपने एंजियो एम्बलाइजेशन के लिए देखना है कि जी हो सकता है आर्टीरियल ब्लीड हो, वो तो आपके एंजियो एम्बलाइजेशन से कंट्रोल हो जाएगी। और फ्रीक्वेंट सीरियल मॉनिटरिंग हो, फिर इसको आपने उसकी हाइपोथर्मिया कोएगुलोपैथी उसको करेक्ट करना है और वापस पे थिएटर में लेके आना जब ये करेक्ट हो जाए, पैक अपने रिमूव करना। तो इसकी तो चल फिर यार आगे मैं कॉम्प्लिकेशंस भी थी, वी डिडंट गो इनटू द डिटेल ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन लेटर ऑन, ये रिकरेंट हेमरेज हो सकते हैं, बिलियरी कॉम्प्लिकेशंस हैं लाइक बिलियोमास, बिलियरी फिस्टुलास, एब्सेसेस, हीमोबिलिया, जो पेशेंट डेवलप के एब्सेसेस बनती हैं इन पेशेंट्स में, सूडो एनेरिज्म बन जाती हैं, पोर्टो वीनस पोर्टल वेन और आर्टीरियल, ये फिस्टुलास बन जाते हैं। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन है जो बाद में आपने कुछ जो एंडोस्कोपिक मैनेजमेंट है, ईआरसीपी, और उनके साथ एक परकुटेनियस जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, उनके साथ जो है ना करके फिर ये मैनेज करते हैं। चल ठीक है यार, ठीक है। ठीक है सर, तो इस तरह से आप भी कोई स्लाइडें बना के ले आया करें, जिस तरह इसने किया था ना हाइड्रेटेड चेस्ट का, तो उसलिए एटलीस्ट वो पिक्टोरियल जो है ना वो जरा चीजें मतलब को हाँ याद। याद रहती है। हाँ चल आखिरी जल्दी से करते हैं सिनेरियो, फिर खत्म करें हाँ, आखिरी। अब आप होंगे सर एग्जामिनर, मैं कैंडिडेट बन जाता अच्छा हूँ। ठीक है उस्मान। हाँ जी सर, सर। मिजान से पूछे थे कोई और को बीच में कुछ नहीं ऐड करनी है इसमें, कोई ये नहीं। नहीं यार, बेहतरीन है। ठीक है सर, चले सर, लास्ट वन। अच्छा, a 70 years old male, you with the complaints of pain, upper abdomen, uh, and high grade fever for the last 3 days. So how will you proceed? So this elderly male patient who has presented with the fever and upper abdominal pain. So I will take the history from the patient. I will ask about what's the duration of the symptoms of particularly the pain and its association with the meal and aggravating or relieving factors, fever, high grade or low grade fever, and what the treatment he has already taken, and what is the comorbids. His son tells you that he has become weak for the last 4 months. He has lost some weight according to his son.
Okay, he has lost the weight. So then I will explore further whether this patient having any other sign and symptoms. For example, the patient having anorexia, how much the weight he has lost, and Yes, he has whether they, anorexia as well. yeah, Anorexia, he has anorexia as well. anorexia as well. So I will ask him whether any workup has been done for this or not, whether he has reported to No, anywhere. no workup has been done. No workup has been done. So obviously, keeping in mind the anorexia and weight loss, I will keep in mind that the patient might have a malignancy in the patient, and the why this patient has developed the fever. So I will move on to the after the history. I will move on to the examination. I would like to see his is he dehydrated or not? What is the pulse, blood pressure, and see whether he's jaundice or not, and then we move on to the abdominal examiner to see is there any palpable mass or not. Um, and is there any tenderness in the abdomen or not? The upper abdomen is diffusely tender, and he appears to be jaundiced. Appears to be he is jaundice with fever and pain. That means the patient having signs symptoms of the cholangitis. So obviously this patient requires the admission and resuscitation with antibiotic IV fluids, antibiotics, and at the same time will send the I will ask my radiologist for the ultrasound of the abdomen along with the liver function test, CBC, and other investigation as well to confirm my So diagnosis. ultrasound shows an obstructive picture. LFT show an obstructive picture, and ultrasound uh, shows a diffuse mass in the region of pancreas. So what will you do next? So there's a mass. So that means so what is the size of the count bile duct? The common bile duct is a bit dilated. It is about 11 millimeter. 11 minutes. And LFTs, what's the bilirubin level? Bilirubin level, it is raised. It is above 30, and alkaline phosphatase is above 1,000. 1030 micromolar, 30 milligram per Milligram. deciliter. 30 milligrams. So is severely jaundiced. So the next step would be in this patient after the resuscitation antibiotic, we see what is the response of the patient. Is it responding or not? Whether the fever is settling down or not. If the fever is not settling, then I will be this patient will require the ERCP because of the patient having a cholangitis with dilated CBD. And so I will discuss the case with the gastroenterologist. And meanwhile, I'll also get the contrast and CT scan of the abdomen. Okay. So the contrast in a CT scan shows there is a mass in head of pancreas, which is about 5 centimeter in size, 5 by 4 centimeter in size. In the head of the pancreas. And is there any what invasion? additional information would you like? The radiologist has just given this information. What So additional information would you like to ask from radiologist? Yeah, so I would ask him whether there are any signs of the liver mets, ascites, or is this involvement of the sphenomesenteric artery or the vein, and what is their status. So and then similarly I asked these questions from the radiologist. Okay, so there is no involvement of sphenomesenteric artery or vein, and apparently there is no ascites or any liver mets. What next? Okay, The patient with conservative management, the patient has improved. His fever has settled, and his jaundice is settling. His jaundice is settling, right? So this patient that seems seems to be a resectable lesion. Meanwhile, I will discuss the case and the multidisciplinary team meeting and involving the oncologist and the gastroenterologist and the radiologist. And most likely, the decision of the MDT would be to because it seems to be resectable. The next step would be to stage the disease with the contrast CT scan of the chest, abdomen, and pelvis, and get the tumor marker CEA level and the CA 19-9. At the same time, the investigation for the fitness of the patient to undergo the surgery, because most likely the patient will require the surgery. And so, okay. Any other investigation you would like to carry out? So for the staging investigation, afterwards, PET CT will be required to stage the disease.
whether there are any distant mets or not. Anything else? So once this investigation has been done, and US will be required to see whether there any involvement of the, because on the CT there is no involvement of the vein and artery, but US is the best to see whether there any lymph node involvement or not, whether there any vascular invasion or not. So Okay, his family is not willing for this big surgery before definitive diagnosis is made. They say that give us the definitive diagnosis. So how will you, US if you want to get a histopathological diagnosis, what is So- your best option? So in this, the patients, because it seems to be resectable lesion, so the diagnosis is not a prerequisite for the curative resection. I will counsel the family, but at the same time, will also involve the gastroenterologist for the US guided FNA of the lesion and submit it for the in the histopathology department. Okay, so you have decided for the surgery. So now what next? How will you So- proceed with the surgical procedure? So again, I will consult the patient, and I will inform the recommendation of the MDT, and I will consult the patient and the attendant about this procedure. The nature of procedure is the risk and the benefits. I will explain them after getting the informed written consent. This patient will require the surgery at a tertiary care center involving the hepatobiliary and pancreatic surgeon. So if it's available, so then we'll proceed. If it's not available at Medicare, I will refer the patient to the tertiary care center. So will Hello? the Sir. hepatobiliary surgeon is conducting this surgery. What are the basic steps of this surgery? Okay. So need to optimize the patient. Need to arrange the blood products. Everything is FFP. done. Everything Yeah. is done. Just give me the surgical steps. Surgical steps. Okay, the surgical steps in the open procedure. So the first step is exploration to see whether there are any, just before going with the curative resection, you need to have a diagnostic laparoscopy to see whether there might be, What do you want to see in diagnostic laparoscopy? there might be a small liver nodules which are not picked up on the CT scan, and similarly there might be a fluid. Cytic fluid, which is not picked up in CT. So we need to get the collect the fluid for the cytology and wait for the result. Okay. So if it's a Then- negative, then we'll proceed with the patient, the team proceed with for the curative resection. And what is the curative resection? What So do you call the the first steps are the exploration. So to see the extent of the involvement and seeing starting with the pelvis, noting whether any nodules in the bowel on the I'm bowels. asking Liver. what do we call the curative resection? Sorry, What is the proper name of the curative resection? it's a pylorus preserving pancreaticoduodenectomy. Okay. So after the seeing whether there are no distant mets, and then the assessment of the local mass, to whether it's a fix or not. And the first step would be doing the trial dissection to see whether the tumor is not fixed to the superior mesenteric vein. So we need to create a tunnel just in front of the superior mesenteric vein, and at the neck, at the level of the pancreatic neck. So once it's assured that it's not, the vein is not involved, so the next step would be. Okay. So you have done the resection. Now you are moving. You have done the resection. So how will you do the reconstruction? So the reconstruction would be the pancreaticojejunostomy, choledochojejunostomy, and Roux-en-Y jejunojejunostomy. Okay. So what about the stomach? So pancreaticojejunostomy, choledochojejunostomy, and Roux-en-Y gastrojejunostomy. Okay. So post-operatively, the patient on day 5, he's developed fever, and there is a leak of in brain. You can see some yellowish fluid
inside his drain. So what will you do now? So my suspicion would be probably this patient has pancreatic fistula. If it's a yellow, so there might be a leakage from the polydocojejunectomy site. So again, I will see the patient, what is the hemodynamic status, and I will examine the patient. What is the pulse and blood pressure? What's the condition of the abdomen? Whether there is any evidence of tenderness, localized or generalized, right? Patient is clinically stable. So what else? Clinically he is Clinically stable, vitally stable. stable. He is stable. So that means it's a controlled fistula. I will send this sample, the drain fluid for the analysis, along with the serum amylase, drain fluid amylase, and for the checking of the bilirubin of the fluid as well. So I will get What else? I will get the contrast and CT scan to see whether there any collection inside the abdomen. There is a peripancreatic collection of about 10 by 5 centimeter. Okay, then I will talk to my intervention radiologist. So if he can put in a second drain percutaneously and drain this collection. And then we monitor the patient for the. ठीक है बस. Okay. Thank ठीक you. है ठीक है सर. You can carry on this VIVA regarding the peripancreatic collection according to the time. Okay. Like मतलब अभी इसने कहा है ना कि 5 दिन में fluid collection थी. You can you put in the drain, then you remove the drain, and then again there's a collection, and it after let's suppose 6 weeks there's still a collection. Still a collection. Okay. So meanwhile, we add on the octreotide, and I will get the MRCP to see whether then from where it's leaking. Okay, good enough. और इसी तरह से पहले भी वो जो collection है उसमें आप infective element भी डाल सकते हैं. वो basically what is important is whatever the fluid you bring out, आप उसके culture sensitivity भी करवाएंगे. हाँ, CSP बिल्कुल. You're right. ठीक है ना? Right. So वो important है इसमें, बस बाकी तो excellent. बाकी शफकत बड़ा अच्छा दिया तूने यार ये. हाँ. Yes. सर सिर्फ एक भाई लोगों जो मैं टेक्निकल बात नहीं है, वो नॉन टेक्निकल सी एक है कि जब वाइवा में आप लोग शुरू करते हैं बोलना, तो जिस तरह हम लोगों को सिखाया जाता है कि पहले अपनी हिस्ट्री लेना है, फिर एग्जामिनेशन करनी है, तो इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन अगर आप जब अपने वंस द एग्जामिनर गिव्स यू अ सिनेरियो एंड यू स्टार्ट फ्रॉम हिस्ट्री अगेन. Like Shafaqat, once you were answering in the beginning, because usme you initially began with, I will what was the scenario? You started from KG how yes, you started from fever. You started from fever, the characteristic of fever, and then you came back to any comorbids or such thing, na? So इसको अगर हम उस सिनेरियो में रखें, उसी सीक्वेंस में रखें, तो इट्स इजियर फॉर अस टू क्या उसको कहना चाहिए, रिमेंबर एंड टू एक्सप्लेन. इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन. देन ऑन हिस्ट्री आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट एनी प्रीवियस hepatic illness or any comorbids. Then on examination and even on history, I would like to know the character of, rather आपने फीवर के लिए जो टर्म, मैं सिर्फ टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूँ. फीवर के लिए आपने यूज किया कि जी एक टर्म यूज की थी यार, सॉरी मैं दरमियान में डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तो वो उसमें आप वो टर्म्स यूज कर रहे हैं ना, तो अच्छी रहती है. द कैरेक्टर ऑफ फीवर और द कैरेक्टर ऑफ पेन, तो इट एनकम्पासेस एवरीथिंग. कि कब शुरू हुई, पेन कैसे शुरू हुई, क्या था उसका. अब इफ द एग्जामिनर वांट्स टू नो, वो आपसे डिटेल में सारा पूछेगा जी व्हाट डू यू मीन, तो फिर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. लेकिन वो भी आपसे चूंकि एज अ कंसल्टेंट पूछ रहा है, तो इतना बता देना मेरे ख्याल में काफी है. इस तरह से बोलना कि जी मैं फीवर और पेन की कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे फर्दर जो है वो डिफाइन करना चाहूंगा, डिस्क्राइब करना चाहूंगा. मैं जस्ट ये वो स्पोकन उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि बोलने में इसको जरा थोड़ा सा अपनी ना, चूंकि हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको भी इम्प्रूव करते जाएं, अपना बोलने के स्टाइल को भी. ठीक होगा, ठीक होगा, ठीक होगा. और कोई इसमें ऐसा कोई चीज, कोई एनी अदर थिंग?
उस्मान भाई कुछ बताएं। Usman is muted. अच्छा, ये जो आपका एग्जामिनर है ना, एग्जामिनर पे ढीला था, इसको खुद नींद आ रही होती है मेरे ख्याल में वाइवा लेते हुए। नेक्स्ट आंसर अब आप लेना वाइवा। मैं तो कह रहा हूँ आमिर को भी ना कि ये वाइवा जो ना, हम बल्कि वाइवा लेने के हम सिर्फ ना वो कैंडिडेट बने, आप लोग एग्जामिनर जो है ना। नहीं चल ठीक है, इस तरह भी ना तैयारी कुछ हो ही रही है, कोई 2-3 चीजें कुछ कवर हो जाती हैं। अभी सर उठ गए हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग ठीक बंद है, कर दे बेशक। चलिए मैं कर, ठीक हो गया सर। थैंक यू सो मच। अगेन वी डिस्कस 3 scenarios, right? So inshallah see you tomorrow again. So thank you so much. So I'm going to stop the recording here now.